Okay, guys, so welcome everyone. Today we are going to start your next lesson, that is profit loss. Name of the lesson is profit loss. So let's see, guys, what do you mean by profit? What do you mean by loss? Profit ला आपण मराठीमध्ये म्हणतो नफा आणि लॉस म्हणजे काय? तोटा. लॉस म्हणजे काय? तोटा. तुम्हाला या ठिकाणी काय दिलं बघा, एक आनंद मेळा या ठिकाणी दाखवलेला आहे. And you can see, guys, there is a stall of pav bhaji here, and there is one more stall of भेलपुरी. ओके, सो आपल्याला माहिती है सगळ्यांना कि हम जब जब यहाँ पे जाते हैं आनंद मेला, किसी मेले में, ये तो हमें हम वहाँ पे जाके हमारे पेट पूजा करते ही है. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन एक्चुअली इन योर टेक्स्ट बुक. डिटेल्स ऑफ प्रणव शॉपिंग. प्रणव ने शॉपिंग किया और सरिता ने भी शॉपिंग किया. प्रणव ने शॉपिंग किया और सरिता ने भी शॉपिंग किया मेले में. लाइक सो प्रणव हैज बॉट vegetables of 70 rupees, butter of 25 rupees, bread of 45 rupees, masala of 14 rupees, and some miscellaneous things. Miscellaneous म्हणजे काय? और बहुत सारी चीजें उसने ली, वो यहाँ पे सिर्फ miscellaneous दिया है, right? So that means total किती झाले बघा. So total किती आहे? 5 plus 5 10 plus 4 14 1 carry over. Yes. So 8 plus 2 10 plus 4 14 plus 1 15 plus 2 17. Now, so the total price was 174 rupees, but the amount एक second, guys. Yes. Now the amount Pranav gained through his sales is rupees 160. Okay. Pranavची शॉपिंग फॉर his stall, त्याचा स्टॉल होता, त्याच्या स्टॉल तेवढी शॉपिंग झाली and he gained 160 rupees. So 174 मध्ये त्याला 160 rupees मिळाले. That means how much did Pranav spend in all, and he why so disappointed? So he spent 174 rupees. इतना उसने खर्च किया, उसको कितना मिला? 160 रुपीज मिला. दॅट मीन्स ज्यादा पैसा खर्चा हुआ और कम पैसा उसको मिला. जास्त पैसे खर्च झाले, कमी पैसे त्याला मिळाले, म्हणून तो काय आहे? डिसअपॉइंटेड आहे. बिचारा थोडासा नर्वस आहे. प्लीज विथ योर साउंड. Yes, Raj, please wait. There are some disturbances in between, guys. Chalo. So next there is a girl known as Sarita. Okay, so details of Sarita shopping for her stall. तो क्या झाला? उन्होंने स्टॉल लगाया था एक्चुअली. So plates 20 rupees, spoons 10 rupees, चटनी 30 rupees. See, तो प्रणव ने क्या किया था? ये सब पाव भाजी का शॉप लगाया था. इसने क्या किया? पानी पूरी, पफ राइस, onion. Yes, mute your sound. So she took किती खर्च झाला बघा तिला? 0 0 0 0. 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, 11 plus 2 13, 13 plus 6 19. So 190 rupees तिने खर्च केले, पण तिला 230 रुपये मिळाले. ओके, शी गेन बाय सेलिंग. पाणीपुरी विकून तिला 230 मिळाले आणि याला पावभाजी 174 रुपये खर्च आला, but he got only 160 rupees. So he was disappointed because he had a loss. And Sarita is happy because she had a profit. तिला काय झालं होतं? प्रॉफिट मिळाला होता, राईट? सी बघा ना, 190 रुपीज खर्च गेले, but she got 230 rupees. Therefore she was happy. So how much Sarita spent on her भेल विकली तिने. भेलपुरी आहे का पाणीपुरी काय? एक सेकंड. यस, भेलपुरी आणि पावभाजी. ठीक है, चलो जो भी है. And she is happy because she got more amount than she spent. So if Sarita had bought twice as much, she would have gained twice as much, right?
So what should Pranav do the next time to set up stall to sell more pav bhaji and make more gains? चला आणखी पाव भाजी विकून जास्त पैसे मिळाले पाहिजे. So what is profit and what is loss, guys? So people do various kinds of jobs to earn money. Shopkeepers sell articles that people need. They buy things from wholesale traders in large quantities at lower rates. Shopkeeper काय करतात तर होलसेल मार्केट मधून मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू विकत घेतात कमी पैशामध्ये. ज्यादा होलसेलर के पास से वो क्या करते हैं चीजें लेते हैं कम दाम में. इट कॉस्ट लेस दॅन द प्रिंटेड प्राइस. तर प्रिंटेड प्राइस पेक्षा कमी त्यांना मिळतात. सपोज बिस्किटचा पुडा आहे, एक्झाम्पल सांगतोय. सपोज अ बिस्किट पुडा जर तुम्हाला 5 रुपयाला दिलं असेल, एक 5 रुपयाचा पार्लेजीचा बिस्किटचा पुडा तुम्ही घेतला, बट वो पार्लेजी का बिस्किट का पुडा जो दुकानदार है उसको 5 रुपए से भी कम कीमत में मिलता है. गेटिंग समझता है? सो व्हेन दे सेल सच थिंग्स 4 का मिलता होगा नहीं तो 3 का जो भी है. So when they sell things in retail, okay, please don't mute your sound, unmute your sound. So when they sell things in smaller quantities, they charge a greater amount. देखो ना, एक 5 रुपए का बिस्किट पुडा लेने के लिए जाओ तुमको 5 रुपए देना पड़ेगा. बट सपोज देखो जैसा समोसा है, समोसा लेने जाओ तुमको 12 रुपए का समोसा मिलता है. एग्जाम्पल है, एक समोसा लेने जाओ 12 रुपए का मिलता है, लेकिन तुम उसको बोलो भाई मेरे घर में पार्टी है और मुझे 100 समोसा चाहिए. तो वो क्या करेगा, तुमको एक समोसे की कीमत कम कर देगा. तो आपको 9 रुपए या फिर 10 रुपए में एक समोसा देगा. सो एक समोसा लो तो 12 रुपए होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा समोसा लो तो आपको पैसा कम मिलता है. Now, if the selling price is more than the amount paid for it, there is a gain and it is called as profit. Sometimes an article is sold for less than the amount paid for it while buying, and the damage is known as the loss. So selling price, if selling price is greater than the cost price, तुम्ही ज्या किमतीला घेतलं त्यापेक्षा जास्त किमतीला जर एखादी वस्तू विकली तर तुम्हाला काय होणार, यू विल गेट अ प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट हो जाएगा इफ यू सेल at a higher price than the price at which you bought it. And if it is reverse, अगर हे रिवर्स है, सपोज सेलिंग प्राइस कमी आहे, तुम्ही ज्या किमतीपेक्षा घेता, then it is a loss. So you'll come to know when we'll solve examples, guys. Now you got two formula here. Now लक्ष द्या, दोन फॉर्म्युला ठिकाणी आहेत. If the selling price is less than the cost price, then it is a loss. Guys, लक्षात घ्या. If the selling price is less than the cost price, so loss is what? What is the formula of loss? Loss is equal to cost price minus selling price. Cost price म्हणजे काय, ज्या किमतीला एखादी वस्तू आपण विकत घेतो, आपण म्हणजे दुकानदार थोडक्यात, आणि सेलिंग प्राइस म्हणजे ज्या किमतीला ती विकली जाते. Now, totally reverse of it is the selling price is more than the cost price. There is a profit. What it is? There is a profit. So what is the formula of profit? Profit is equal to selling price minus cost price. Getting, guys? Yes. Now let's see some solid example here. कोणी बघायचे? Hamid Bhai bought bananas worth rupees 2,000 rupees. अमित भाई ने 2000 रुपयाचे बनाना आणले, केळी आणली. किती? 2000 रुपयाची केळी आणली, 2000 रुपये का उन्होंने बनाना केला लाया. सो दैट इज व्हाट, इट इज द कॉस्ट प्राइस. हे काय झाले, कॉस्ट प्राइस. ही यहाँ पे दिया है, इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2000 रुपीज एंड ही सोल्ड देम ऑल एट 1890 रुपीज. तो सबने उन्होंने बेचा, कितने बेचा? 1890 रुपीज में, 1890 रुपयाला विकला. सो डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? त्याला प्रॉफिट झाला की लॉस झाला बघा आता. See, if you see here, guys, your cost price is greater than selling price. 2000 रुपए में लाया, लेकिन बेचा उससे कम रुपीस में. Therefore, he had a loss. See, cost price is greater than selling price. Therefore, Hamid भाई suffered a loss. Loss झाला ना, 2000 रुपए तो खर्चा किया, उसको मिला भी नहीं उतना, और जो भी उससे भी कम मिला. So, how much loss? So, formula वापरायचा. Loss is equal to cost price minus selling price is the formula. See, this formula is very important. आपको आगे चले के भी आने वाला है. Loss is equal to cost price minus selling price. So that is 2000 rupees is the cost price minus 1890. So 11 rupees. So 110 रुपये काय झालं? He had a loss of 110 rupees.
Hamid bhai suffered a loss of 110 rupees in this transaction. तो केला तो 2000 रुपये केला है, लेकिन वो बेच के तो उनको उतना पैसा नहीं मिला. एवढे पैसे मिळाले का नाही, म्हणजे त्याला काय झालं, लॉस झाला. 110 रुपये का लॉस हो गया. समजलं. One more example we will see, so you will be getting the concept very well. Now Harbhajan Singh cricketer नाही बरं का, एक नाव दिले इथे. Harbhajan Singh bought 500 kilogram of rice for 22,000 rupees and sold it all the rice at a rate of 48 rupees per kilogram. How much profit he did make? त्याने काय केलं, 500 किलो तांदूळ आणले. किती रुपयाला? 22,000 रुपयाला. 22,000 रुपये में 500 किलो राइस लाए और वो राइस उन्होंने बेचा. लेकिन कैसे बेचा? 48 रुपीज पर किलोग्राम. लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है. क्या लगा? सेलिंग प्राइस माहित नहीं है टोटल. दिस इज द कॉस्ट प्राइस. See, the cost price is 22,000 rupees. Selling price is what? 48 into 500. Selling price is what? 48 into 500. That is 24,000. Is already 24,000. Now it is very clear, guys, that cost price is 22,000 and selling price is 24,000. So cost price is smaller than selling price. In other words, selling price is greater than cost price. Selling price is greater than cost price. So Harbhajan Singh को क्या हुआ? Profit हुआ. He had a profit. लक्षात दिया, he had a profit. So कितना profit हुआ? We have to use the formula. Profit हुआ. Profit the formula price है. Profit is equal to selling price minus cost price. Selling price minus cost price. That is 24,000 minus 22,000 is equal to 22,000. So in this transaction म्हणजे काय, तांदूळ आणून तांदूळ विकणे. लक्षात घ्या, चावल लेके आना और चावल बेचना, ये जो ट्रांजैक्शन है. सो हरभजन सिंह मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2000. उसको 2000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है. गेटिंग गाइस?